एष रेडियो नेपालः सम्प्रति समाचारः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः ध्रुव भट्टराई। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलः निगदति शिक्षाविहीन समाज कल्पितुमपि न शक्यते। राष्ट्रपति पौडेलः अवोचत् शैक्षिक विकासाय सर्वकारण विहितस्य निवेशनस्यानुसारं प्रतिफलं प्राप्तव्यं तत्प्राप्तये विद्यार्थिभिश्च केन्द्रितैर्भाव्यम्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयस्य 49तम दीक्षान्त समारोहे ह्यः राष्ट्रपति पौडेलः अवदत् शिक्षायां नेपाल सर्वकारस्य निवेशनं पर्याप्तं न सदपि यथाशक्ति प्रयासस्य दर्शनात् देशस्य भाग्यं भविष्यं च जनशक्ति उत्पादनेन सह सम्पृक्ते स्तः। राष्ट्रपति पौडेलः भौगोलिक सांस्कृतिक जातीय विविधता युक्तस्य नेपाली समाजस्य एकतायै वर्तमान संविधानं व्यवस्था च अत्यन्त महत्वपूर्ण स्तः इति समस्पष्टयत्। समारोहे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डः अभाषत एकविंशः शताब्द्या भूमण्डलीकृतस्य विश्वापणस्य समाह्वायानं सम्बोधनाय त्रिभुवन विश्वविद्यालये गुणात्मक सुधारस्य इच्छाशक्ति संकल्पश्च आवश्यकौ स्तः। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विश्वापणे प्रतिस्पर्धनक्षमाया जनशक्ति उत्पादनाय अस्माकं कुत्र त्रुटिरभूत् विगत समये विश्वविद्यालयेन अर्जितो जनविश्वास किमर्थं दुर्बलो जातश्चेति प्रश्नश्च समीक्षा आवश्यकी अस्तीति प्रत्यपादयत्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डः मार्गे कथित गणतन्त्र विरोधी पक्षेण भ्रम विस्तार्यमाण स्थिति हेतु परिवर्तनस्य पक्षधारणायां राजनीतिक दलानां नेतॄणां च भूमिकाया जनताया समक्षं प्रापणत्वेन कार्याणि सम्पादयितुं स्थानीय जनप्रतिनिधीन् अनुरणद्धि। ललितपुर महानगरपालिकाया 75तमस्य स्थापना दिवसस्य अवसरे ह्यः आयोजिते कार्यक्रमे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अकथयत् जनताया अधिकार सम्पन्नता कारक सर्वकार स्थानीय स्तर स्थिति हेतोः जनप्रतिनिधिभिः विषयममुं जनतायां सम्प्रेष्य अनुकूल चिन्तनस्य विकासो विधातव्यः। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अब्रवीत् काष्ठमण्डप उपत्यकाया अवकर व्यवस्थापनाय पेयजल समस्याः निराकरणाय च सर्वकारस्य सदैव सहकार्य सहयोगो भवतः। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सार्वजनिक निर्माणे दृष्टानां त्रुटि दुर्बलतानां सम्पदां पुनर्निर्माणे विद्यमानाय नीतिगत विधिगत जटिलतायाश्च सम्बोधनाय सार्वजनिक क्रयण प्रक्रियायां नीतिगत विधिगत सुधारस्य प्रयास विद्यमान स्थिति प्रावोचत्। कार्यक्रमे भौतिक पूर्वाधार यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला अकथयत् स्तरत्रयस्य सर्वकारेषु परस्परं सहकार्य समन्वय विधाय अग्रे वर्तेषु सत्सु विकास निर्माण पेयजलावकर व्यवस्थापनानि सरलतया विधातुं शक्यन्ते। ललितपुर महानगरपालिकाया प्रमुख चिरीबाबु महर्जन प्रतिवेशी देशै प्रयुक्तं प्रविधिं प्रयुज्य काष्ठमण्डप उपत्यकाया अवकर व्यवस्थापनं विधातुं शक्यते इति चर्चा अगदत् तदर्थं तत्कालं कार्यं विधातव्यम्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डः प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषदः कार्यालय स्थितात् अवलोकन कार्य कक्षात् निर्माणाधीनयोः नारायणगढ बुटवल राजमार्गस्य मुगलिन पोखरा राजमार्गस्य च श्रव्यदृश्य प्रविधिर्माध्यमेन यो निरीक्षणं व्यदधात्। निरीक्षणानन्तरं प्रधानमन्त्री प्रचण्डः परियोजना अपेक्षानुसारेण सम्यक् अग्रे बढ़ितुं नाशक्नोत् इति टिप्पणीम् अकरोत्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अवोचत् शिलाखण्ड बालुका शिला विद्युत प्रभृतीनां निर्माण सामग्रीणां समस्या सर्वकारेण शीघ्रं समाधास्यते। परियोजना निर्धारित लक्ष्यानुसारेणैव अग्रे सारणीया इत्यत्र बलं ददत् प्रधानमन्त्री प्रचण्डः निर्धारित समये एव आयोजनाः सम्पादयितुं च निरदिशत्। नेकपा एकीकृत समाजवादी दलस्य केन्द्रीय सचिवालय उपवेशे उपाध्यक्ष डाक्टर बेदुराम भूषाल, महासचिव घनश्याम भूषाल, उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला चेति पदाधिकारिभिः प्रस्तुतं दलस्य विधान संशोधनस्य प्रस्तावम् आधृत्य विमृश्यमानं वर्तते। आलोकनगर स्थिते दलस्य केन्द्रीय कार्यालये सञ्चाल्यमाने उपवेशे राष्ट्रिय सभाया आसन्न निर्वाचने दलस्य पक्षतः प्रत्याशिनां मापदण्ड निर्धारणेन सह सामयिक राजनीतिक विषयोपि विमृश्यमानो वर्तते। सचिवालयोपवेश अद्य सम्पद्यमानो वर्तते। सर्वोच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशपदे परामृष्टानां षण्णां जनानां श्रवणं ह्यः समाप्तमस्ति। गत शुक्रवासरात् आरब्धं संसदीय श्रवणम् इदं ह्यः समाप्तं वर्तते। समित्या ह्यः बालकृष्ण ढकालस्य सुनील पोखरेलस्य च श्रवणं विहितम्। इतः पूर्वं गत शुक्रवासरे सारंगा सुवेदी इत्याख्यया अब्दुल अजिल मुसलमान इत्यस्य च गत रविवासरे महेश शर्मा पौडेलस्य टेक प्रसाद ढुङ्गाना इत्यस्य च श्रवणं विहितम् आसीत्। सर्वोच्च न्यायालयस्य रिक्तानां
न्यायाधीशानां कृते न्याय परिषदा गत मार्गशीर्ष मासस्य पञ्चमे दिवसे षण्णां जनानां परामर्श प्रस्तुतः आसीत्। परामृष्टानां न्यायाधीशानां अनुमोदनाय संसदीय समित्या उपवेश श्व बुधवासरे वस्ता। प्रतिनिधि सभाय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पर्यटन समिति ह्यस्तनोपवेशे नेपाल वायुसेवा निगमस्य यूरोपीय संघेन कलंक सूच्यां स्थापनस्य विषय निगमस्य प्रतिनिधिभिः सह विमृष्टमस्ति। उपवेशन असैव पौषस्य पञ्चमे दिवसे नेपाल वायुसेवा निगमस्य सुधाराय भावी रणनीतिक योजनाया सह समिति समक्षं प्रस्तुता भवितुं निगमस्य प्रमुखेण सहिता प्रतिनिधय निर्दिष्टाश्च वर्तन्ते। नेपाली कांग्रेस दलस्य सभापति शेरबहादुर देउवा नेपालस्य संविधानस्य अनुसारेण केनापि एकेन दलेन बहुमत प्राप्ते अवस्थाय अभावेन एकस्मात् अधिकानि दलानि मिलित्वा सर्वकारस्य संघटनाय बाध्यावस्था स्थिति स्पष्टीकरोति। नेपाली कांग्रेस दलस्य नुवाकोट जनपद समिति प्रथमं जनपद सम्मेलनं ह्य विदुरस्थाने सम्बोधन सभापति देउवा समावेशिनीं समानुपातिकीं च निर्वाचन प्रणालीं सुनिश्चित्य समीचीन संविधानस्य निर्माणस्य कारणेन एकेन राजनीतिक दलेन बहुमत प्राप्ति अवस्था नास्ति च समस्पष्टयत्। तदवसरे सभापति देउवा दलाभ्यन्तरे घात अन्तर्घातश्च विद्यमानस्तः इत्युक्त असन्तुष्टिं व्यक्तवान्। पूर्व प्रधानमन्त्री च देउवा कांग्रेस दलसभ्यन्तरे विद्यमानान् समूहोपसमूहान् समाप्य दलम् एकीभूतं सद् आगामिनी निर्वाचने बहुमतस्य प्राप्ति अवस्था भविष्यतीति विश्वासं व्यक्तवान्। कार्यक्रमे कांग्रेस दलस्य वरिष्ठ नेता डाक्टर शेखर कोइराला दलं सम्प्रति अपि सुदृढावस्थायां वर्तते इति भाषणेन अन्तर्घातकैर्जनै दलं दुर्बलीकृतमिति आरोपयत्। नेपाली कांग्रेस दलस्य महामन्त्री गगन कुमार थापा गदति यही दलस्य विधानं न परिपाल्यते तेषां कृते दण्डस्य व्यवस्था कर्तव्या। नेपाली कांग्रेस दलस्य तनहुँ जनपद समित्या प्रथम निर्वाचन क्षेत्रस्य क्षेत्रीय समित्या ह्य दमोली स्थाने आयोजितं कार्यक्रम सम्बोधन महामन्त्री थापा दलस्य आभ्यन्तर निर्वाचन प्रणाल्या अनुसारेण दलाभ्यन्तरे समूहोपसमूहानां निर्माणस्य बाध्यता समाप्त्यर्थं बलं प्रादात्। महामन्त्री थापा यस्मिन् स्तरे यस्य प्रतिनिधि निर्वाचनं विधीयते तत्र ते एव सदस्ये तेषां निर्वाचनस्य व्यवस्था विषये विमर्शो जायमानो स्थिति अवोचत्। प्रतिनिधि सभाया सभामुख देवराज घिमिरे कथयति अपेक्षानुसारेण देश विकास विधातुं सक्तो नास्ति। झापा जनपदस्य हल्दीबारी ग्रामपालिकाया द्वितीयवटा क्षेत्रवर्तिनी लक्ष्मीनारायण मन्दिरे ह्य श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञम उद्घाटन सभामुख घिमिरे ईषद् औदासीन्यस्य कारणेन देशे अपेक्षा अनुसारेण विकास न सम्भूतो स्थिति अतर्कयत्। सांसद विकास कोषस्य वित्तस्य अवरोधनेनापि सांसदानां निर्वाचन क्षेत्रे विधातव्यस्य विकास निर्माणस्य आयोजनासु प्रत्यक्षं प्रभाव सृष्टो स्थिति च असौ अतर्कयत्। बारा जनपदस्य जितपुर सिमरा नगरपालिका तृतीयवटा क्षेत्राध्यक्ष तारा कार्की 5 लाख रूप्यकाणं उत्कोचन सह अधिकार दुरुपयोगानुसन्धान योगस्य हेटौडा वर्ती समूहेन यो निगृहीतो वर्तते। मार्ग निर्माणस्य क्रमे वडाध्यक्ष कार्की स्थानीय राजन उप्रेती इत्यस्मात् उत्कोच स्वरूपेण 5 लाक्षाणां रूप्यकाणं ग्रहणावस्थायां जितपुर स्थितात् एकस्मात् अतिथि सदनात् निगृहीत इति सिमरा स्थानीय प्रहरी कार्यालयस्य प्रमुख प्रदीप क्षेत्री अवोचत्। शान्ति स्थापनाय कार्ये संलग्नानां सैनिकानां वृत्तिगत दक्षताय पारस्परिक समन्वयात्मक क्षमताय च अभिवर्धनस्य उद्देश्येन नेपाली बहुराष्ट्रियाभ्यासस्य शान्ति प्रयासस्य चतुर्थं संस्करण आयोक्ष्यते। नेपाली सेनाय आयोक्ष्यमाण अभ्यासोऽसौ आगामिन फाल्गुन मासस्य 8 दिवसात् 21 दिवसं यावत् सञ्चालयिष्यते इति सैनिक जनसम्पर्क सूचना निर्देशनालयेन ज्ञापितं वर्तते। अभ्यासेन शान्ति स्थापनाय कार्ये दृष्टानां समवायनं विषयेण सहभागी राष्ट्राणां सैनिका सुसूचिता भविष्यन्ति इति समाचारः।